गुड मॉर्निंग। और आज बहुत ही मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। मुझे आपको होस्ट करने का मौका मिल रहा है, आपको प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप दुबई में बैठे हुए हैं, मैं इंडिया के छोटे से शहर देवरिया में बैठा हुआ हूँ। फिर भी हम दोनों लोग बिल्कुल कैमरे पे सामने हैं और बहुत सारे लोग हम लोग का इंतजार भी कर रहे हैं। आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज डीएक्सन इंडिया और डीएक्सन वर्ल्ड को एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज जाने वाला है। और मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कुछ नया सीखने को आज मिलेगा, तो बहुत ही लक की बात है। मैं बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को। पैर छू के प्रणाम करता हूँ कि आपने ये मौका दिया मुझे। मैं आपके बारे में पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। डीएक्सन इंडिया को आपने जो पहचान दिया है, और डीएक्शन को जो आपने पूरे वर्ल्ड में एक नाम, एक पहचान दी है, और नए आप देते चले जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी कामयाबी की तरफ जो डीएक्शन बढ़ रहा है, डीएक्शन पूरा वर्ल्ड बढ़ रहा है। तो ये सब आपकी देन है और आपने इंडिया में जो किया है। तो आज प्रोफेसर सर का मीटिंग है, और इंडिया के पहले क्राउन एम्बेसडर आप रहे हैं। आपने ही, आपके ही मार्गदर्शन में पूरा का पूरा इंडिया इतना शानदार व्यापार कर रहा है। साथ ही आपकी बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, शानदार तरीके से आप इकोनॉमी के प्रोफेसर का पद आपने बहुत ही शानदार तरीके से, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। इस समय आप दुबई में हैं, और दुबई में गोल्डन वीजा, एक शानदार व्यक्तित्व, एक इन्वेस्टर के तौर पर आप, आपकी पहचान है वहां पे। पिछले साल हम भी गए थे आपका आशीर्वाद लेने, और आपके भरोसे जो है दुबई को देखने आए। बहुत ही, बहुत एक शानदार हम भी लेके आए हैं। हम चाहेंगे कि कभी एक एक फ्लैट हमारा भी दुबई में हो। ये सपना भी वहां से लेके आए हैं। तो और आपने जो ये आरबीसी चैनल दिया है, आरबीसी चैनल आपका रोज पर डे हजारों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। इसमें सैकड़ों जो वीडियोज हैं, वो उसको भी हम लोग प्रमोट करते रहते हैं लगातार। हर एक एक टॉपिक पर एक एक लीडर्स के जो वीडियो हैं, उससे नई टीमें, पुरानी टीमें मोटिवेट होती रहती हैं। हम लोग को भी कभी डिमोटिवेशन होता है तो जाते हैं अपने बैकग्राउंड में, अपना वीडियो, आपका वीडियो आरबीसी चैनल पर देखते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो आज एक बड़ी शख्सियत, करीब 80 लाख लोग आपके टीम में है। एक मेरिकलस, एक मेरिकल है जो है ये भी दुनिया के लिए, कि 80 लाख लोगों का नेटवर्क आपके पास में है। और सबसे बड़ी चीज है कि पूरा विश्व आज आपके मार्गदर्शन में काम कर रहा है सर। ये बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी पहचान है। और हमें लगता है कि एमएलएम इंडस्ट्री में जो हम लोगों ने कभी सुना था, रॉयल्टी और तमाम चीजें, सिक्योर फ्यूचर, वो सब आपके माध्यम से हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। और हम चाहेंगे कि आज आप आइए और एक नई ऊर्जा, एक नया संचार आप इंडिया के लिए और बाकी देशों के लिए बताइए कि, और हमारा मार्गदर्शन करिए, ताकि इस बिजनेस को हम और अच्छे तरीके से कर सकें, बहुत बड़े पैमाने पर लेके जा सकें। तो वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज जी। थैंक यू सर, आपका थैंक इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बधाई। ओके, थैंक यू। आफ्टर आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स मैं अगेन बैक हूँ। मैंने बताया मैं जब टाइम होंगे मैं थोड़ा ये लाइव ऑनलाइन आएंगे यूट्यूब में। ये मैंने थोड़ा टाइम निकाल कर मैंने फिक्स किया। अभी उसका जो लोग फायदा उठाएंगे कभी कभी इस तरह का, 2 महीने 3 महीने मुझे मालूम नहीं कितना महीने के एक बार मैं आऊँगा। बिकॉज मेरा बहुत ट्रेनिंग यूट्यूब में होता है, ऑनलाइन में होता है, फेसबुक में है, सो मेनी चैनल में लोग देखते हैं दुनिया में। अभी जो यहाँ मेरा फिजिकल ट्रेनिंग चलता है एवरी संडे करामा डीएक्सएन ऑफिस में दुबई में, और मेरा सभी ट्रेनिंग होल यूएई में, एंड प्लस मिडल ईस्ट में कहाँ कहाँ मेजर प्रोग्राम होता है वहाँ भी वो लीडरशिप कैंप होंगे,
रिकॉग्निशन नाइट होंगे, एनिवर्सरी होंगे। जब कंपनी के में से रिक्वेस्ट करता है वहाँ भी जाता हूँ। अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा फ़रवरी में एक हो गया, इंटरनेशनल लीडरशिप कैंप। वहाँ लगभग 40 देश के ऊपर 40 कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव थे, यहाँ मर्क्यूर होटल में। इसमें जो लोगों ने बहुत बड़ा मोबिलाइज़ करके उसका फ़ायदा उठाया, बड़ा ग्रोथ के लिए बहुत कंट्रीज़ ने नया-नया कंट्रीज़ ने जो डीएक्सएन में आज जो जुड़ा है, वहाँ उसका ग्रोथ, उसका टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर बहुत स्पीड से चलता है। उसको देखे तो 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस का ये नेटवर्क इंडस्ट्री में जो कंट्रीज़ ने जॉइन हो गया, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ होंगे, इवन नया-नया यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, इवन मिडल ईस्ट में ऑल अरब कंट्रीज़, नया कंट्रीज़ जो लास्ट 4-5 इयर्स में पर्टिकुलरली कोरोना का पीरियड में पार कोरोना का पहले आफ्टर कोरोना जो जॉइन हो गया, उसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। उसको कंपेयर करें तो हमने जो 25 बरस कंप्लीट करने वाला है इंडिया, 2025 में 2000 मई में हमने ओपन किया। अभी जो ये इंडस्ट्री का वेलनेस इंडस्ट्री एंड ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी इतना तेज़ी से चलता है, पर्टिकुलरली आफ्टर कोरोना, हमने आँखों बंद करके खोले तो उसके पहले बिलियंस ऑफ डॉलर इंडस्ट्री का ग्रोथ हो गया है। अभी आपको ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी, ग्लोबल इन्वेस्ट इंडस्ट्री का लेटेस्ट मार्केट 2022, 2022, द लेटेस्ट फिगर 2022 दिसंबर एंडिंग, इट इज़ 4.2 ट्रिलियन था, 4200 बिलियन अमेरिकन डॉलर। वो ऑलरेडी अभी 5.6 ट्रिलियन हो गए। दिस इज़ द independent analysis research data, independent research analysis of Global Wellness Institute in America, GWI. Global Wellness Institute is the independent organization which is doing a lot of research on wellness industry, prevention, nutrition, and longevity, weight management and weight loss, and health tourism. सो मेनी सेक्टर्स आपको यहाँ जोड़ा है 5.6 ट्रिलियन। आप देख सकता है ये अभी वेलनेस इंडस्ट्री में वेलनेस रियल एस्टेट भी आ गया है। वेलनेस रियल एस्टेट का लेटेस्ट आपको फिगर देखे तो इट इज ऑलमोस्ट 598 बिलियन मार्केट वेलनेस रियल एस्टेट का। मैं क्यों बताता हूँ, ये वेलनेस रियल एस्टेट कपल ऑफ इयर्स पहले वो नहीं था, वेलनेस टूरिज्म नहीं था। 651 बिलियन, these are all new happenings in this industry. Already DXN has entered, आपको मालूम है, वेलनेस टूरिज्म, वेलनेस रियल एस्टेट हमारे साथ ऑलरेडी मलेशिया में डॉक्टर लिम ने 2-3 जगह को डेवलप किया है ऑलरेडी। आप जो मलेशिया गया 30th एनिवर्सरी आप देखे होंगे। सिमिलरली हमारा 3-4 आइलैंड्स जो खरीदा है, ये सभी वेलनेस टूरिज्म, वेलनेस रियल एस्टेट को डेवलप करने के लिए। सिमिलरली आपको देखे तो बहुत बड़ा एक मार्केट है हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस। दैट इज 1000
79 बिलियन 2022 में सेल्स, 2022 1079 बिलियन अमेरिकन डॉलर. दिस इज ऑन फूड एंड सप्लीमेंट्स बोथ. फूड में how food is become more and more healthier today. People are concerned with the daily eating. ब्रेकफास्ट होंगे, लंच होंगे, डिनर होंगे, कैसा है हेल्दी बना सकता है विदाउट एनी यू नो fat. Too much of fat is dangerous. Too much of saturated diet is dangerous. Too much of boiled food is dangerous. Everything, anything today what we are eating is not a healthy food. जो जनरल फूड घर में होंगे, होटल में होंगे, रेस्टोरेंट में होंगे, ट्रैवल में होंगे, सभी जगह में न्यूट्रिशन फूड जो लोग लेना है हेल्थ के लिए उन्हें, इसीलिए हेल्दी ईटिंग हैज बिकम मोस्ट इम्पोर्टेंट वेलनेस मार्केट टुडे. इसीलिए डीएक्सएन में डॉक्टर लिम ने ये सभी चीज को ये हमारा ये गुड लाया हेल्दी ईटिंग के लिए. हमारा अभी राइस प्रॉन ऑयल लाया हेल्दी ईटिंग के लिए, वर्जिन कोकोनट लाया हेल्दी ईटिंग के लिए, पिंक सॉल्ट लाया हेल्दी ईटिंग के लिए. अरे ये सभी अभी स्पिरुलिना का सीरियल बनाया हेल्दी ईटिंग के. अभी बहुत कुछ चीज अभी हमारा जो 3 वेराइटीज का ऑर्गेनिक, नेचुरल, 100% केमिकल फ्री, मैदा फ्री एंड प्रोसेस्ड व्हीट फ्री फ्रॉम मिलेट से जो कुकीज बनाया है विद स्पिरुलिना, ये विद जीएल स्पिरुलिना कुकीज, चोको कुकीज, कुकीज without maida, without processed wheat, from रागी, बाजरा, जोवर, ये सभी नवधान्य से जो बनाया है, विदाउट सैचुरेटेड ऑयल, विदाउट व्हाइट शुगर. उसमें आप क्वालिटी देखे तो उसमें क्या क्या नहीं है. नो ट्रांस फैट, नो केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव, सो मेनी थिंग्स, नो नील 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 डाला है. ये सभी जो आज का हेल्दी ईटिंग है उसका मार्केट 1000 बिलियन के ऊपर है. वो कैटेगरी में आता है हेल्दी ईटिंग विद सप्लीमेंट का एडिशन होकर. हमारा हेल्दी ईटिंग जो आप कोई फूड लिए तो अभी कुकीज लिए तो फ्रॉम मिलेट, दैट इज अ हेल्दी ईटिंग. कुकीज लिए तो विदाउट शुगर हेल्दी ईटिंग. कुकीज लिए तो इवन विदाउट ट्रांस फैट हेल्दी ईटिंग. बट उसके ऊपर उसको भी ऊपर हमने गैनाडर्मा डाला है, पिरलेना डाला है. हमारे पागल लोग यूज नहीं करेंगे. अरे वही मरेंगे, इसी तरह रोग बढ़ेंगे. पॉलिटिक्स नहीं है, ये बिजनेस है. आप मार्केट को यूज नहीं करें तो किसी ने मार्केट को उड़ाकर जाएंगे. एक समय में हमने डीएक्सएन कंपेयर करके जाता है, वो कंपनी इतना किया, ये कंपनी इतना किया, ये कंपनी का 2000 टर्नओवर करोड़ है, ये कंपनी का 3000 है, 5000 है. वाई? इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी हम कहाँ हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? मेरा ट्रेनिंग नहीं चाहिए आपको. ओपनली मैं बताता हूँ. आप रिजल्ट इनका दे तो नहीं आना, आपका चेहरा मुझे नहीं दिखाना. आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट हूँ बिकॉज मेरा एक एक सेकंड भी, नॉट मिनट, आई एम नॉट कैलकुलेट मिनट, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग hours, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दिन, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग वीक्स, आई एम कैलकुलेटिंग सेकेंड्स. इतना डाटा मैंने एवरी ईयर आई एम. अरे लास्ट ईयर तक 4.2 ट्रिलियन में था. लेटेस्ट डाटा मैं सर्च करता था आज प्रिपरेशन के लिए. लास्ट 10 days आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू पीपल. इट इज ए हाईली इंटेलिजेंसिया, हाईली नॉलेजेबल, रिसर्च बेस्ड
बेस्ड, दो यूनिवर्सिटी वेलनेस इंडस्ट्री का यूनिवर्सिटी है तो वहां भी नहीं सिखाएंगे। ये सभी डाटा को हमने हाथ में उठाकर आपको देने से क्या फायदा है यार, बताओ, यूज नहीं करे तो। हमको आज इंटेलिजेंस चाहिए जो एजुकेशन लेकर, लिटरेसी लेकर, जो मैं बताता हूं उसको डुप्लीकेट करने वाला, ये डाटा को मार्केट में अप्लाई करने वाला, ये डाटा को टीम को ट्रेनिंग देने वाला, ये डाटा को टीम ने बताने वाला, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना बड़ा ग्रोथ है, इतना बड़ा फ्यूचर है, क्या करते हैं तुमने, पूछने वाला चाहिए। छोटा मोटा कंट्री से आज जो आज का उसका जन्मदिन हुआ, जन्म लिया इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं है इसके हाथ में, वो 1000 करोड़ जाता है। कितना प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया इंडिया में, कितना प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड किया, हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट, लेटेस्ट कॉफ सिरप से लेकर केसर तक। बहाना बनाने वाला नहीं चाहिए, काम करेंगे या नहीं बताओ, देयर इज नो अदरवाइज आपका प्रेजेंस यहाँ नो यूज है। मेरा इकोनॉमिस्ट का, यूनिवर्सिटी इकोनॉमिस्ट का एमफिल, अरे आज मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ direct selling industry in Shulin University, Dr. Kamal Kanti Jani, he has associated, he has become professor. He was asking me recently by calling me last week, sir आपका full 1000 वर्ड्स में ये चाहिए लाइफ स्टोरी। मैंने बताया क्यों सर, हमने यहाँ फर्स्ट ईयर डिग्री इन डायरेक्ट सेलिंग, अरे यूनिवर्सिटी अप्रूवल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रूवल, दिस इज ऑल अप्रूवल के साथ ये यूजीसी अप्रूवल कोर्स। इसे 1001 का हमने 10 लोगों का लाइफ स्टोरी का किताब बनाएंगे, ये सब्जेक्ट सिलेबस में डालेंगे, सिलेबस में डालेंगे आपका लाइफ स्टोरी को। कहाँ बैठा है यार इतने पर का लीडर को आपका अपलाइन, जिंदा हूं अभी तक, रखकर क्या किया है आपने बताओ। My story, my life story is going to be a syllabus in the university. What's your problem? What's your problem? Tell me. After I am sending that, I will tell you. First year course student, they are going to start with this first year. This is the one of the subjects that they are going to include. Success story of the extraordinary people in this direct selling industry, wellness industry. अबे आप ये फिगर को देखे तो 5600 बिलियन, 5.6 ट्रिलियन में, व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ डिफरेंट दिस वेलनेस, न्यूट्रिशन, वेट लॉस इटसेल्फ 1000 बिलियन के ऊपर। मैंने बताया नेक्स्ट हाईएस्ट आर ऑलमोस्ट इक्वल पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट, दैट इज अनदर बिग मार्केट इन वेलनेस इंडस्ट्री, 1089 बिलियन। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी, 976 बिलियन। इसमें आपका ये सभी फिटनेस सेंटर्स आएंगे, सभी तरह का फिटनेस है, 576 बिलियन। वेट लिफ्टिंग वो है, बॉडी बिल्डिंग, सो मेनी थिंग, एवरी रोड में आज आ गया है, एवरीबडी इज स्पेंडिंग मनी ऑन दैट, they want to be slim and trim, they want to live long, anything related to longevity, health, prevention, nutrition, immunity, weight loss, anti-aging, you know, and increasing the expectancy of life, gracefully aging, even living with enough strength, health, and all senses tip top, even at hundreds, even at 100 plus age. Lot of people are there. They have taken care of it. All this put together, what we call wellness. Even as I told you, wellness tourism, $651 billion. Again, another this is wellness real estate. I told you,
even mental wellness, that is a separate wellness, mental health. Because a lot of people are facing the problem of aging process, geriatric centers, the diseases related to the old people, they lose the mental health. That mental health market is 181 billion. As you can also see, so many other small in this industry, market is growing like a spa 100. That is also part of the this wellness industry. And so put together, all these things put together, the market is going to be even public health, prevention, and personalized medicine, and always traditional medicine. Traditional medicine like Ayurvedic, all these, they again 519 billion American dollar. Traditional medicine. Our all Ayurvedic say this will come under traditional medicine. Hence, your objective is to encash this market. You want to grow big. So, what I would like to tell you is how fast we are growing, how big market is going to be. That we have to analyze, because this industry is going to be very fast. This industry, if you are going to take into account in another 4-5 years, now we are 2022, 5 years. Oh, this is only next 5 years. This industry will be again expected to do the forecast to, because it is growing at the speed of almost 25%. And now, you know that I told you 4.2 trillion, 5.6. And by 2027, they are predicting it is going to cross 8 trillion American dollar. 8 trillion. And imagine then again, from couple of years back, less than 10 years, 8 years, it is almost 4 trillion to 8 trillion. It is going to double. And so naturally, how fast it is going to grow, you cannot imagine. It is a meteoric speed. It is going to be in meteoric speed. And we must keep ourselves ready, keep abreast for such kind of growth. Hence, my advice to all of you, those who are a serious entrepreneur, serious businessman, want to grow big, you without wasting time, you have to go in a multiplication mode. Hence, without that, I think we are going to lose the market, because the DXN has such a tremendous market. And, so far as all our products are concerned, they are having such a good result. Even our ordinary basic product, daily usable product, we are seeing this kind of result. Imagine our specialized product, particularly if you are going to take into account Cardiceps, Lion's Mane, all these now Ayurvedic series, and Ganoderma, particularly Morinzyme, all these things in 100% strength, because many of these things we are using in a small percentage in coffee, tea, soap, shampoo, paste, cosmetics, daily usable, lot of things. We are using the extract either in liquid form or in powder form. बट आपको मालूम है, ये सभी 100% का स्ट्रेंथ में हमने फुल्ली यूज करे तो हमारा तंदुरुस्ती के लिए इनफ क्वांटिटी एवरी डे. Where is your health is going to be, at what speed you are going to grow.
because market will not wait for anybody. आपका मालूम है जो हम नहीं करे तो इसका benefit somebody else into use. If we are not going to do that, make it physically also. If we are not going to make use of this, I am sure that some other companies, our competitors, are similar products, need not necessarily same product. Even the products which are there, some health benefit. They don't have such a miraculous benefit, even some benefit. People are searching for something which will give them, 5% benefit, 10%, 15% benefit and all, if you are not going to make use of that. Hence, you have to take into account how fast we are going to be. Now I will give you some of the analysis on this, mainly, percentage wise, the total global sales latest in this industry, particularly if you are going to take into account what is the latest global sales market share of various categories of product. In this, we can broadly divide them into, area wise or continent wise, or Western countries, or European market, or Latin America, North America and Latin America, and as well as, in the case of Asia and Pacific. If you are going to take into account Latin America, they are the highest, that 70% of this Latin American market, if you are going to take into account the market share of this product, 36% well less, 36% of the product goes to wellness, but in some of the countries, the market share of some other products, it is not related to wellness. The personal care or cosmetics and personal care is highest in Latin America. Asia and Pacific's 37%. If you are going to take into account in country wise, I will come to you later. In the case of wellness product. Similarly, if you are going to take into account other countries, particularly the market of Europe and other countries, if you are going to take into account the market share of 24 to 27% is, America and other countries are the generally usable product, textiles, clothes, household products. These are taking the more share. Again, Latin America, the 12%, if you are going to take into account in this some of these product daily usable, and rest of the countries 80%. And the process of global sales, if you are going to take into account here, the chunk of that is related to health and wellness market. That is a wellness market is a big market after personal care, toiletry, cosmetics. That is part of both put together, 36% plus 22%. You can see the market of almost, um, 46, 50, 58%, nearing 60% of the market. And you can see some of these figures, top market in excess of 1 billion US dollar. I told you, these are all 24 countries. Latest, you can see, they are the 1 billion plus dollar countries in annual sales. The countries who are doing
$1 बिलियन अमेरिकन डॉलर। $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर माने इंडिया का 8,500 करोड़ के ऊपर दोस्त मार्केट। इसमें आपको मालूम है, red figure you can see into account. This is that is minus over 22, 21, 22, 22, 20, because last 3 years minus growth rate, and all these blue are positive growth rate. This is a 3-year compounded annual growth rate, CAGR, compounded annual growth rate. You can see in percentages. If you are going to take into account in this 3 years, this is 22 versus 21. That is 1 year. And you can see, as usual, United States is leading in this industry. आपको ये क्यों चाहिए? Market share, market leader, which country, which products are going fast. Without ये analysis के बिना आपका ये मार्केट कहाँ जाएंगे without statistical analysis, without research figures. These are all, I told you, independent organization, that is Wellness Institute research figures. And some of them are World Federation Direct Selling Association for. So all put together I have combined. And if you are going to take into account this United States, that is number 1. And China was once or twice led number 1. Then it used to be number 2 or 3. Now China has been pushed down to number 4 position. आपको मालूम है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में कोरिया आता है, साउथ कोरिया 515 40 billion or 51 18 billion, sorry, 18 billion. This is in million. जो फिगर है in US dollar, you can convert that into billion. I talk about in billion. 40 billion, 18 billion, then Germany 17 billion. This is the annual sales of the latest 2022. Then China 15 billion, 15.815 or 15,815 million US dollar. बिलियन में आपको 15 बिलियन रफली. जापान 11 बिलियन. मलेशिया, छोटा कंट्री, मलेशिया इज डूइंग 8 बिलियन अमेरिकन डॉलर. इमेजिन 8 बिलियन माने more than 45,000 crore Indian rupees. We are still doing less than half of Malaysia. India's total, India figure I will come, it is there in the 11th position. We were there in 15 earlier, 18, पहले 18 में था, हमने 25th पोजीशन में था. हमने $1 बिलियन का कंट्रीज में 5 बरस पहले नहीं था. 5 बरस के पहले $1 बिलियन क्लब कंट्रीज इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में. $1 बिलियन क्लब. $1 बिलियन क्लब माने इंडिया का 8,500 करोड़ के ऊपर सेल्स करने वाला कंट्रीज इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. इसमें हम नहीं थे. हमने ऑलमोस्ट 4 और 2019 or 20, I think we entered about 3 or 4 years back, $1 billion. That means we were in the 20 first entered $1 billion group, $1 billion countries group in direct sale. हमारा 22 पोजीशन में था, वहां टॉप 20 कंट्रीज. देन ओनली 20 कंट्रीज था.
हमने then somebody became 21st country $1 billion, we became 22nd. Then we went to 21st position, 20th position, 17th. Now latest is इंडिया, आप देख सकते हैं 11 पोजीशन में है, $1 बिलियन में 11 पोजीशन। हमारा लेटेस्ट सेल्स है वर्ल्ड में 4,500 बिलियन अमेरिकन डॉलर, 4,582 लास्ट ईयर 2022, 4,582। दैट मीन्स आप 85 रुपीज रफली डॉलर रखिए तो 83, 84 वट एवर इट मे बी फ्लक्चुएटिंग, रफली 85 के तो आपको रुपीस में मिलेंगे, नियरिंग आपको 48,000, नियरिंग 50,000 करोड़। एंड आपका मैं जो बताता हूँ, वी आर ग्रोइंग इन दैट स्पीड, 8,500 per billion, 4 billion, and not sorry, 38 and 4th, around 40,000, because अभी 2025 में already 40,000 we have crossed. Imagine 2025 में prediction is 64,500 crore. 25 end में we are in 24 beginning. ये whole year है अभी only March, 25 up to December. These are all figures 31st December of each year 2022, because here international calculation all year ending December, not March like India. That is our local auditing. Local purpose year ending is 31st March, but internationally January to December. And so by December 2025, I think we are going to cross, because this multiplication becomes very fast. आप आज we are already in, you know, that 4,230 crore, a billion, 4,000, सॉरी 3,230 बिलियन है, तो आप देखिए कितना स्पीड में जाता है, बिकॉज 4,000 आर ताइवान, because we both the green, we are in the upward fast growth. This red, that is there is a fall over a previous year, and this is 22, 22, 21, 22 difference, percentage growth difference. This is 3 बरस का compounded annual growth rate, and 3 बरस का compounded annual growth rate also 13.3%. India is growing average 13%. देखिए अभी 13%, अनदर 2 years में हमारा 25% ग्रोथ, अभी दिस में बी इवन हायर, 13% may become 20% also, because 25% पे गए तो 1 बरस में 2 बरस में 50% growth from current rate. Because what I am telling is हमारा growth rate is going to be very fast in the coming years. उसको हम रेडी होना है। आप पैसा कमाना है तो रेडी होना, नहीं तो किसी का जेब में पैसा जाएंगे, आपका जेब में पैसा नहीं रहेंगे, क्योंकि जो लोग अपॉर्चुनिटी को स्नैच करता है, यूज करता है, फास्टली ग्रोथ करता है, वेरी फास्ट टर्नओवर करता है, उसको लाभ मिलेंगे। ये तो बिजनेस है। चुपके बैठकर बहाना बनने वाला, एक्सक्यूज देने वाला, नकारात्मक सोच में बैठने वाला, कल देखेंगे सोचकर बैठने वाला का जेब में पैसे नहीं डालेंगे, पैसे नहीं जाएंगे। ये आपका दिमाग में क्लियरली होना। अभी देखिए ये 11 पोजीशन 22 to 23 में we are in the top 10. It is a figure is yet to come out 23 December. Maybe in a couple of months we may get it.
एंड मेरा सोच में 25 एंड में we may be in 7th or 8th position also. It is not a surprise. That speed India का market is growing. आपको मालूम है after South Korea, Germany, small countries लेके China, what is the population of Japan? It is 12-13 crores. That's all. What is the population of Germany? It is not even equal to one of our big states. You know, half of our big states. What is the population of Malaysia? 3 crore population. Malaysia is the 6th position. Brazil again and a small country, 7th position. Mexico again another small country, 8th position. France again a small country, very small country in population. You know, 7th Brazil, 8th Mexico, 9th France, 10th Taiwan. All these are very small countries except in terms of size of population, except China. All are small countries, very small country. What is their sales? 18 billion, 17 billion, 15 billion, 11 billion. All these are, where is 3.5 billion? Where is all this? How many times they are more higher than us? Imagine इंडिया का अपॉर्चुनिटी. इंडिया का बाद में आपको मालूम है टॉप बिलियन डॉलर sales club. This is a $1 billion sales club countries. Next was we are getting Italy, a small country, Canada, small country in terms of Colombia, Thailand, Peru, Argentina, Russia, all these countries. And they are coming, Indonesia, United Kingdom, and Vietnam. And latest edition is Australia, Philippines, and Poland. Philippines and Poland latest edition into $1 billion sales club globally. तो आप सोच सकता है क्या होना ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग रिटेल सेल्स को अगेन आप कंपेयर करें तो. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस आर द रीजनल सेल्स टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स में. आप देख सकता है अगेन इंटरेस्ट रेट्स इज शेयरिंग वन ऑफ द हाईएस्ट of the world market, 22%, and then Korea 11%. Then you can see Germany, China, Japan, all these countries. Because top 10 में अभी इंडिया नहीं आता है because we are 11th position and rest of the world. And regional sales wise also you can take into account this, what these countries or regions are doing. What is the market share in Asia Pacific? एशिया पैसिफिक में आप देखिए यहाँ वेरी स्मॉल परसेंटेज of Saudi Arabia, Middle East, and because they have not entered, only 1%. 1% में इतना growth है. Only DXN is number one. Last 22 years, 23 years in the Middle East. Only we are the leaders. We are the market leaders. Last 22 years continuously. Nobody has overtaken us in the Middle East. What ours is the biggest growth. Even this 1% major is our contribution. And African countries are now only DXN is again big chunk in African countries. It has shared even with this 1%. If you are going to take into account Asia, remaining Asian, all countries put together 41% Asia. And you can see here America, they are that is North America. If you are going to take into this is Europe share, 20%,
34%. Totally major volume coming in the regional sales, if you are going to take into account what is the market share. Direct selling in Asia Pacific 2022 sales, if you are going to take into account. As you know that world market is moving very fast in direct selling industry. It is wellness is a very enlarged market. Wellness demand puts together direct selling is somewhere it is going trillions of dollars. Even new technology in distribution, that is latest concept of direct selling with the technology, online trading, all these e-marketing, all will put together. E-marketing is again a very powerfully used by network marketing companies. And if you are going to take into account all this, technology driven market, आप physically driven market को बैठे तो you are going to lose the market share in a big way. I'm telling any direct selling company, they are more depending on the physical market. वो होता था 20 बरस के पहले, 20 or even 15 बरस के पहले, because last 10-15 years only very fast growth of online trading, online marketing. All direct selling companies have now adopted information technology, IT driven marketing. Information technology, IT driven market being applied, online sponsoring, online trading, online promotion of product, online retail sales, ग्लोबल मार्केटिंग, DXN तो वेरी पावरफुल टूल है, क्योंकि आप दुनिया का एक कोने में बैठकर होल दुनिया का मार्केट आपका मुट्ठी में रखकर काम कर सकता है। आप कहीं भी हो, मैं अभी दुबई में हूँ, आपके साथ अभी बातचीत जब होता है, मैं दुबई करामा सेंटर में DXN HQ में हूँ। मैं लास्ट 2 इयर्स यहाँ हूँ। मैंने ग्लोबल मार्केट का इंटीग्रेशन दुबई से करता हूँ। मैं यहाँ हूँ, it is easy for me to link the global market, not only through technology. टेक्नोलॉजी में आप कहीं से भी कर सकता है, physically also because lot of people work here. 200 कंट्रीज का लोग यहाँ रहते हैं, दुबई में हैं। 200 कंट्रीज का नेशनल, 200 countries nationals are here. They are working here, they are doing some job, they are doing some trading, they are doing some business, or they are using this as a trading center. They are global businessmen, but they keep on coming to Dubai to link the global business. Hence, naturally, this is the best ever global business center. इसीलिए उसका फुल्ली फायदा उठाने के लिए मैं यहाँ हूँ, because technology driven, both physically driven, both market we can move very fast. So direct selling in Asia Pacific 2002 retail sale, if you are going to take into account, latest publication, this is the 13 July, means 22 का 13 July 2023 published data. इसमें आप देखें तो you can take into account as usual in Asia Pacific पे ऑस्ट्रेलिया आता है. Australia this is in US dollar, it is in local currency. This is a sales percentage, upward or down. All these things you can look into it, look into the figures and analyze. इसमें ऑस्ट्रेलिया is leading. ऑस्ट्रेलिया again देखिए 2 करोड़ का population, 2 crores. They are doing, Australia
is equal to India's annual population increase. उसका साइज पॉपुलेशन वो तो इतना बड़ा ग्रोथ करे तो आप देख सकता है वेयर दिस मार्केट इज गोइंग टू बी इन द कमिंग ईयर्स. नेक्स्ट इज चाइना, हांगकांग, India. India is in the fourth position, 3,230. You can take into account next Indonesia, Japan, Kazakhstan, Korea, North Korea, Malaysia, New Zealand. All these are coming. Next in terms of the volume and growth rate, and you can see the figure: Singapore, Taiwan. These are all Asian countries. Thailand, Vietnam, and other Asia Pacific remaining volume. And what speed this direct selling in Asia Pacific retail sale is going up? You can understand how fast one can grow if you are going to concentrate on this industry properly. Share of wellness products by country wise. आपको मालूम है, आप देखिए दिस एशिया पैसिफिक में अगेन हाईएस्ट शेयर ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट इंडिया 74%. 74% India's direct selling companies sales coming from wellness products. क्या इंडिया में अपॉर्चुनिटी है डीएक्सएन के? बिकॉज डीएक्सएन का सभी प्रोडक्ट वेलनेस प्रोडक्ट है. इसी तरह का रेंज हो, internal application, internal consumption, external application, Ayurvedic series, food series, toiletries, or anything if you take into account, सभी में health, prevention, nutrition और immunity है. एंड इसमें इस तरह का चीज को क्लोथिंग, एक्सेसरीज और हाउस होल्ड गैजेट्स, हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो like TV, washing machine, or this grinders, this kind of product, household appliances, these are all there in many direct selling company. It is not that India's demand is only this, as you say, wellness product. 74% our sales coming from wellness. Similarly, next is Hong Kong, highest wellness product, and you can also see next Indonesia, next Taiwan, like that country-wise, Korea. What is the demand for share of the wellness product? Similarly, this side America, North America and South America put together. There, even, if you are going to take into account, highest demand is about 41% only in Indonesia, this, Mexico and other, these are concerned 35%, 47%, 35%, 44%. If it's Canada, all these countries, North America and this put together, less than 40%. Here, 75% plus. Similarly, Europe, if you are going to take into account wellness products, some of these are highest in some of these countries. But still they are 71, 70% and all, and then percentage comes down while those who are using lesser. And some of these countries are well 12, 13, 15% because the demand for other products, market share of other products, wellness products, because how DXN particularly, this is both macro and micro analysis. इन मैक्रो में ग्लोबल पिक्चर आपको दिया हूं,
माइक्रो में कंट्री वाइज मैंने दिया हूँ, कंट्री वाइज डिमांड फॉर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट फास्ट में चलता है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू इंडिया, बिकॉज़ आज का जो है, इंडिया का पोज़ीशन क्या है, एवरीवेयर इंडिया इज़ लीडिंग इन द वेलनेस इंडस्ट्री, उसको उसका आप जो एनकैच करना, अभी देखिए हमारा एलोवेरा प्रोडक्ट है, कोम्बुचा है, ये सभी इसमें आता है, न्यूट्रिशन में। हाउ मेनी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड? आप you can analyze, you can evaluate how these products are going to conquer the market. इसीलिए मैं जो बताता हूँ आपको, जो ये इंडस्ट्री में मार्केट शेयर ऑफ wellness products are going to be still faster, बहुत तेजी से ये बढ़ेंगे आने वाले दिन में। एंड आने वाले दिन में हमने ये मार्केट स्कोप, market demand, and the gap between demand and supply. सप्लाई में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सो फार एज डीएक्सएन इज कंसर्न। हमारा जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, मार्केट में काम करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। मार्केट में नॉट लाइक ए ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, वन वर्ल्ड वन मार्केट, वन वर्ल्ड वन बिजनेस, वन वर्ल्ड वन आईडी, वन वर्ल्ड वन बोनस, एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड वन। आपको सिंगल आईडी में ग्लोबल मार्केट को ऑपरेशन करने का अपॉर्चुनिटी देने वाला और एक कंपनी है, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। इतना पावरफुल मार्केटिंग प्लान, उसको आप लोगों ने वेरी सीरियसली एनकैच करना। अभी आपको चाहिए तेजी से मार्केट में काम करके पैसे कमाने वाला। मेरे टारगेट है नॉट 50,000, 1,00,000, 2,00,000 कमाने वालों को मैं नहीं ढूंढता हूँ। आज मैं मेरा ढूंढता हूँ एटलीस्ट दे मस्ट मेक द मनी बिटवीन एनीवेयर बिटवीन 5 lakhs to 10 lakhs पर मंथ। इस तरह का लीडर्स को ही मैं ट्रेनिंग दूंगा। उसके साथ मैं कितना भी टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज मार्केट खाली है। हवा में बातें करने वाला, बहाना बनाने वाला, नेगेटिव बातें करने वाला, वो भी काम नहीं करेंगे, टीम को भी काम करने को नहीं छोड़ेंगे। बिकॉज बहुत मैं देखता हूँ ये कॉमन है ये इंडस्ट्री में। आई एम नॉट गोइंग टू say that this is something rare. This is a common phenomenon. I see this in industry because यहाँ किसी को भी कोई बोझ नहीं है, प्रेशर नहीं है, फोर्स नहीं है। जो काम करेंगे वो कमाएंगे, जो सिस्टम पकड़ेंगे वो उड़ेंगे ऊपर। जो अपलाइन मेंटरशिप को फॉलो करेंगे, रियल अपलाइन मेंटरशिप, हवा में बातें करने वाला नहीं हूं। आपके सामने 10 वर्ष का वीसा के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर बनकर, मैंने आप देखे होंगे रॉबर्ट कियास का 4 कॉलम ESBI, एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आई को जाना, आई कॉलम को, वो इन्वेस्टर्स। मैंने वो कॉलम में हूं, यहां चुपके नहीं हूं। मेरा मॉडल को आप कॉपी करना, करने वाला उसी तरह बढ़ेंगे, वो आपके हाथ में है। आई एम लुकिंग फॉर ए वेरी वेरी डायनामिक entrepreneurs in DXN business and ready to spend my maximum time with them. Meanwhile, this is a common training. जो लोग बढ़ना चाहते हैं उसको एक स्टेप ऊपर जाने के लिए remaining specialized training. I am available whenever you want me to consult or counseling.
आई एम श्योर दैट इंडिया विल मूव वेरी फास्ट। 100 करोड़ हमारा ड्रीम नहीं है, 200-300 करोड़ में नहीं है। हमने हज़ारों करोड़ का मार्केट में बैठा है, महीने में हज़ारों करोड़ हम कर सकता है। 142 करोड़, 143 करोड़ पॉपुलेशन को हम एनालाइज़ करें तो, इंडिया विल ग्रो वेरी फास्ट along with all other sectors. India market is not going to wait for anybody. आप उसको एनकैश करना, टीम के साथ काम करना, लीडरशिप को पकड़ना, अच्छा मेंटरशिप को फॉलो करना, ये आपका ओन बिज़नेस है, आप बॉस हैं, आप किसी का एम्प्लॉयी नहीं, आप वर्कर के तरह यहाँ काम नहीं कर सकता है। आप ओनर की तरह, ओनर का मेंटालिटी जब तक नहीं आएँगे, आप मालिक हैं, नौकर नहीं। ये मालिक का सोच में आप काम कीजिए सीरियसली, आप अमीर बनेंगे। गॉड ब्लेस यू विद फाइनेंशियल फ्रीडम। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्रम एम्बेसडर। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार जानकारी देने के लिए। और आपने जो इंटरनेशनल डाटा को हम लोगों को समझाया वो वाकई गजब था। अपने फरवरी महीने में जो इंटरनेशनल कैंप हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा लोग आए थे, पिछले साल हम लोग थे उसमें, 2023 इंटरनेशनल कैंप में हम लोग थे। और वो एक आनंद, एक अनुभव अलग ही होता है जहाँ इंटरनेशनल क्वालिटी के लोग होते हैं, क्वालिटी लाइफ समझ में आती है वहाँ पे। इस बार किसी कारण से मिस हो गया, नेक्स्ट टाइम हम फिर रहेंगे वहाँ पे। तो वो इस बार चूक हो गई हम लोगों से। तो एक लाइफ जो वहाँ जी के हम लोग आते हैं वो समझ में आता है कि हाँ इंटरनेशनल लाइफ, मतलब क्वालिटी लाइफ जो कहते हैं ना, वो जाके वहां समझ में आती है। थोड़ा निकलना पड़ेगा, सभी लोगों को निकलना पड़ेगा। और आपने एक बड़ा अच्छा आज मेरे जीवन में एक शब्द प्लस हो गया कि वेलनेस रियल एस्टेट और वेलनेस टूरिज्म। मतलब अभी जो होने वाला है ना वो सभी वेलनेस को लेके होने वाला है। यानी कि स्वास्थ्य को और बाकी चीजों को ध्यान में रख के सारी चीजें डिजाइन होगी इन फ्यूचर में। और जरूरत है ये आज के डेट में, क्योंकि इंडियन जो पॉपुलेशन है ना, यहाँ डिजीज और तमाम तरह के हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो हम अभी से अगर सोचना शुरू कर देंगे वेलनेस के बारे में तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। साथ ही आपने बताया कि सलोनी यूनिवर्सिटी ने आप पे एक बुक और एक अध्याय उसमें करने की बात सोची है। तो सर ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि फ्यूचर में कभी भी एमएलएम इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पढ़ाई होगी तो हम गर्व से कह सकते हैं कि ये जिन्हें आप पढ़ रहे हैं उनसे हम लोगों ने फिजिकली सीखा है, उनको हम लोग फिजिकली उनके साथ में रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम लोगों को फिजिकली मिला है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का सब्जेक्ट होगा सर अगर ऐसा होता है तो। और होगा, ऐसा जबरदस्त तरीके से होगा, बहुत ही। और हमारे लिए और पूरे डीएक्सन के लिए है। हम लोगों ने देखा है पिछले साल जब आपको डायरेक्ट सेलिंग गुरु का अवार्ड मिला, ये कोई मामूली चीज नहीं है। कंपनियां तो अलग हैं बट डायरेक्ट सेलिंग गुरु ये अपने आप में एक महान चीज थी। तो वो भी हम लोगों ने देखा। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके मेंटरशिप में हम लोग सीख रहे हैं और कभी नहीं छोड़ेंगे सर। आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, हम आपका आपका आशीर्वाद लेने के लिए समय समय पर आते रहेंगे। साथ ही आपने बताया ना टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी ही है कि आप दुबई बैठे हुए हैं, हम इंडिया में बैठे हुए हैं, फिर भी कैमरे में एक दूसरे को देख कर आमने सामने हम लोग बात कर रहे हैं। और आपने इतनी अच्छी जानकारी आज पूरे इंडिया को दिया कि एक जबरदस्त है। टेक्नोलॉजी का ही देना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर, एक देश का प्रोडक्ट दूसरे देश में, ये सब टेक्नोलॉजी के कारण ही हो रहा है। तो ये होगा सर, इसको हम लोग एंजॉय करेंगे। और टारगेट में कभी भी सर 100 करोड़ का बिजनेस नहीं है, अपने तो नहीं है। कम से कम मेरे तो 100 करोड़ का बिजनेस मेरे टारगेट में नहीं है। हाँ, 1000 करोड़ पीवी का टारगेट लेके हम चल रहे हैं और देर सवेर हम निकालेंगे। और हम ही नहीं, इंडिया में एक से एक लीडरशिप है, अभी सभी लोग बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट भी अपने लेवल पर बहुत अच्छा इसमें काम कर रहा है, लीडरशिप भी, प्रोडक्ट भी। मतलब अब दिखेगा, पूरी दुनिया इंडिया को देखेगी हम जो करके दिखाने वाले हैं।
तो आपने जो डाटा दिया सर, वो डाटा इसको हम बार बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम और बेटर कैसे करेंगे। आप आए सर, समय समय पर आते रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। एक दिन हम आपको सुनने को मिलेगा जहां भी होंगे कि इंडिया आज नंबर वन पे है, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे है। और इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ ईस्टर्न यूपी भी एक शानदार बिजनेस करके देगा सर। तो आपको, आपके लिए आज के मार्गदर्शन के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद और प्यार बनाए रहिए डीएक्सन इंडिया पर। हम लोग बहुत अच्छा करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर।